Assalamu alaikum guys, welcome back to my channel. I hope you're all well. Today I've got this bridal tutorial for you. It's a really nice eyeliner tutorial and red lips, and perfect for any bridal makeup that you wanted to do. At the end, I haven't done it as a bridal barat bride, but I will show you how I created this look. So आज आपके लिए ये बारात लुक लेके आई हूँ. एंड पे मैंने लहंगा नहीं पहनवाया, एक गोल्ड लुक कर दिया था, लेकिन है ब्राइडल मेकअप ही. So to start off with your eyebrows, as always, I'm just using a flat synthetic brush, and I'm using concealer this time. It's a Too Faced concealer, just to carve out the eyebrows, and I'm going to blend this out with a fluffy brush so all the edges need to be blended out. फ्लैट ब्रश से अपना कंसीलर अप्लाई कर दें, एंड देन आपने अपना जो एजेस है वो सारे एक फ्लफ़ी ब्रश से उसको ब्लेंड कर देना है. फिर मैंने बस एक स्टैम्पिंग मोशन से एक ब्राउन सा लिया है एंड आउटर कॉर्नर्स पे ये लगाई जा रही हूँ, एंड देन इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ. Just adding in any brown color, tap it onto the outer corners and then blend it inward. So you're just using this on the socket areas, pressing on a shimmer with my fingers because I think it's better to do that instead of a brush. शिमर थोड़ा सा लगा दिया. फिर एक आईलाइनर पेन से मैंने अपना जो आईलाइनर है उसको मैप आउट कर लिया, मतलब कि यहाँ पे एक रफ सी जैसे एक लाइन क्रिएट करूँगी, एंड देन मिडल की तरफ से लेके जाऊँगी. फिर आईलैशेस जब लग जाएंगी फिर मैं अपना आईलाइनर ख़त्म करूँगी. So I'm mapping out the eyeliner with my liquid pen, and then what I'm doing is it was just a rough line, and then when I go in with my lashes I'll apply the liner properly. But I only took the liner to the middle of the eyes and not to the inner corners. So next I added my hyaluronic serum and then my moisturizer, always leaving time in between your products. I'm correcting with the ink locked corrector, and I absolutely love this product. I've been using it for the last few months now, and it's really got great coverage. So I've got like a slightly deeper tone, and is matching my skin tone on my model. So करेक्टर मैंने लगा दिया, लैशेस लगा दिया. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब जेल लाइनर के साथ अपना जो आई लाइनर है इसको सही तरीके से कर रही हूँ. So now that my lashes are on, I'm perfecting my eyeliner because I know when I've got the base on I could make some mistakes. So the majority of the eyeliner is done here. So just a tip here, if you get any mascara or any eyeliner on your eyelids, just let it dry off and then use a spoolie and brush it off and it will all come off. So एक टिप जो है कि कई दफ़ा होता है मस्कारा या आईलाइनर लग जाता है ऊपर आइज़ पे, और वहाँ पे उसको जब आप साफ़ करते हैं तो वहाँ पे निशान पड़ जाते हैं. आप उसको ड्राई होने दें एंड देन स्पूली की मदद से उसको बस जैसे स्क्रैच ऑफ कर दें, ब्रश कर दें, एंड देन वो कम्प्लीटली साफ़ हो जाता है जैसे मेरा हो गया था. Gone in with my foundation. I'm using the NARS foundation. I'm painting it on. I know it looks like a lot, but this is what gives you longevity in your makeup. Then I'm using a damp beauty blender to tap this out. फाउंडेशन मैंने ब्रश के साथ लगाई थी, लगती ज़्यादा है लेकिन इस तरीके से आपकी लॉन्ग लास्टिंग बेस हो जाएगी और अच्छा लगता है. आप देख लें एंड पे कि बिल्कुल केक ही नहीं लग रहा. ब्यूटी ब्लेंडर डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने उसको टैप करके तो ब्लेंड कर दिया था. H&B concealer, so I'm using H&B concealer. You can get this off TikTok or off their website. This is a really nice concealer. Their foundation is really nice and their powders are really nice as well, the pressed powders. So if you want to invest in those, you can do. I've applied that to the center of the face and just underneath the eyes as well, pulling this concealer slightly upwards at the end of the eye so it gives you a slightly lifted look. Contour, I'm using my Makeup by Mario contour stick, and what I realised is going in with a slightly cooler tone is actually nicer than the really warm tones, even though I'll keep mixing it up when I do my contours, but I find this gives you a nicer contour. So I'm just adding this into the areas of the faces, and then I'm just going to blend this out. सो कॉन्टोर स्टिक मैंने मेकअप बाय मारियो की यूज़ की है. आप जो मर्ज़ी है यूज़ कर ले यहाँ पे, लेकिन कूल टोन्ड एक कलर यूज़ किया है. ये काफ़ी अर्से से मैं यूज़ कर रही हूँ अभी, और मुझे अच्छा लग रहा है कि वार्म टोन से ज़्यादा कूल टोन्ड एक कॉन्टोर कलर यूज़ कर रही हूँ. एक बड़े ब्रश से इसको फ्लफ़ आउट करके तो ब्लेंड कर दूँगी, एंड देन नोज़ के लिए एक छोटा ब्रश यूज़ करूँगी कि वहाँ पर थोड़ा सा आसानी हो जाती है. So buffing out all my contour, and then I'm going to use a smaller brush to actually brush out the nose contour, and then I do tend to go over the nose contour once I've done the concealer as well sometimes, because sometimes it all can get a bit muddled up, so just redefine it again if you need to.
If you leave your concealer to sit like this, it actually gives you a lot more coverage. So blending it away straight away will actually give you less coverage. So it's quite nice to just leave it. I did add my blusher on as well, which was a liquid blush. And I'm just tapping away underneath the eyes with a damp beauty blender, but you can use a brush. I like to use a brush more actually, but this time I just ended up using a beauty blender. टैपिंग मोशन से एक ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने टैप कर दिया कंसीलर को. आप यहाँ पे ब्रश भी यूज़ कर लें. मुझे एक्चुअली ब्रश ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैंने ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर लिया है एंड जो सारी अंडरनीथ जो कंसीलर लगाया हुआ था और हर चीज़ को ब्लेंड की जा रही हूँ. Once everything's blended out, I've just gone in with a puff and a little bit of translucent powder just to set everywhere that I need to set. And I'm not actually done any baking on this particular look today. So इस लुक में मैंने कोई बेकिंग नहीं की, लेकिन थोड़ा सा पाउडर लेके एक पफ से मैंने थोड़ा थोड़ा पाउडर लगा दिया एंड जिधर जिधर मैंने सेट करना था सेट कर दिया. अंडर द आइज़ एक लाइट ब्राउन सा बस यूज़ कर लिया थोड़ा सा डेफिनेशन के लिए. So under the eyes I've just used a little bit of a light brown. I've gone in and topping up my blusher now. These days it all seems to be about the blusher, so I tend to go in a little bit heavier than what I need to, and then at the end if I need to blend out, I'll blend out. Inner corners को अभी finish off कर रही हूँ जेल लाइनर के साथ. Just take your time when you're doing this, when you're doing your inner corners. It's not an easy thing to do, so you just need to kind of like bear with it and just try and get it as clean as you can. A little bit of brown lip liner, then I went with a red lipstick. I can't remember what the lipstick was, but it was actually a lipstick that I used. So I used this as a base and then I went in with a liquid lipstick because I wasn't quite happy with the way it was going on. So यहाँ पे लिपस्टिक मैंने लगा दिया है, तो उसके ऊपर मैंने ये लिक्विड लिपस्टिक लगा दी थी क्योंकि जो पहली लिपस्टिक लगाई थी मुझे इतनी पसंद नहीं आई थी उसका जो कलर था. सो यहाँ पे मैंने बस लिक्विड लिपस्टिक लगा दिया एंड प्रीटी मच ये हमारा फाइनल लुक था. फिर मैंने बाल शाल किया एंड एवरीथिंग. ऑब्वियसली इसको दुल्हन के कपड़े पहना देती तो दुल्हन सही लगती, लेकिन यही लुक आप ऑब्वियसली दुल्हन के लिए भी कर सकते हैं. So I hope you've enjoyed this tutorial and inshallah I'll be back soon. Take care, Allah Hafiz.